What we discussed a little earlier was Bernoulli's equation strong along a streamline. But what happens if we have to consider the balance of forces in a direction that is normal to the streamline? तो आपको जैसे कि मालूम है कि नॉर्मली हम n से नॉर्मल वेक्टर को या नॉर्मल यूनिट वेक्टर को n से हम शो करते हैं. तो यहाँ पर इसलिए n इज यूज्ड फॉर द नॉर्मल डायरेक्शन. किसी भी स्ट्रीमलाइन इन ए फ्लूइड फ्लो को हम देखें और उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्सेस की क्या कंडीशन है, तो उसके लिए फिर then what happens, what changes does it make to the Bernoulli's equation. So we will get the equation this, and you can see the small alteration that we have in the Bernoulli's equation. We get the same P over rho pressure forces. ये वही हैं जो ordinary Bernoulli's equation में along a streamline है, लेकिन इन द नॉर्मल डायरेक्शन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो फिर ये वाली टर्म इज रिटन एज इंटीग्रल ऑफ v स्क्वायर ओवर r इनटू dn प्लस gz कांस्टेंट, एंड दैट इज अक्रॉस ए स्ट्रीमलाइन. नोट डाउन दैट दिस इज नॉट along streamline, not along, across a streamline in a normal direction. So ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट अगर करने की जरूरत पेश आए, लेकिन most of the time that we apply this Bernoulli's equation is along the fluid flow streamline direction. तो ज्यादातर तो वही यूज होती है. For flow along a straight line, R tends to be infinity, and therefore that term reduces to 0, because as r will tend to infinity, this term will reduce to 0, or therefore this will disappear, and the only non-zero term that we are left with is P over rho plus gz. So P over rho plus gz, and that is constant, or P. So the same thing can be written as P is equal to minus rho gz plus some constant C. Now this is the expression for the variation of hydrostatic pressure with vertical distance for a stationary fluid body. Pressure decreases towards the center of a curvature when streamlines are curved. तो ये एक बड़ा अजीब फिनोमेना है प्रेशर का, क्योंकि ये सारा गेम जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसमें प्रेशर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और उससे फोर्सेस की डायरेक्शन किस तरफ है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती. एंड यू नो दैट प्रेशर मूव्स इन द डायरेक्शन, जो फ्लूइड फ्लो मोशन है वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है. सो प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और स्ट्रीमलाइंस आर इन ए कर्व्ड डायरेक्शन, बट द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर with elevation in steady incompressible flow along a streamline, along a straight line, is the same as in the stationary fluid. So the जो पहली कंडीशन थी जहां पर ये कर्व था वहां पर ये पोजीशन है, और ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया साइंटिफिकली कि when there is a curve, तो on the inner side at B, the pressure is lower than the pressure is at A, and it therefore shown as PA is greater than PB. Lekin when the fluid is steady or flowing fluid in the manner as shown, then they are the same. The pressure difference is the same. So therefore
pressure at dB minus pressure A will be the same as pressure at D minus pressure at C. And the equation finally, one possibility that can exist is that if the fluid is compressible, पहले हमने जितनी भी बात की वो इनकम्प्रेसिबल के लिए की, लेकिन अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल हो तो फिर क्या चेंज आएगी और अनस्टेडी भी हो, यानी वो जो दोनों कंडीशन थी स्टेडी मोशन की और कंप्रेस और इनकम्प्रेसिबिलिटी की, अगर वो रिमूव कर दी जाए और इक्वेशन को थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया जाए तो फिर हमें उन टर्म्स को इस तरह से लिखना पड़ेगा P ओवर रो. इसी से हमें P over rho मिला था, but then we had considered that rho is constant. But if it is not, then we write the term as integral dP over rho. For unsteady, to take care of the unsteady motion, we have to see that the velocity will be changing. तभी वो unsteady बनेगी. So therefore, dV by dt into ds plus v square over 2 plus gz, क्योंकि ग्रेविटी बहरहाल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वैल्यू से ही acceleration due to gravity remains the same. Z is the height and the total of these forces will remain constant. So this will be the small alteration, modification that would be made or that will be required if the motion is unsteady and compressible.